Hello dear students, very good evening. Welcome to PW platform. Give me the clearance, audibility and visibility please. Am I audible and visible? Clear? Okay, very good evening. All clear, very good, fantastic. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगेन वेलकम टू PW प्लेटफॉर्म. डियर स्टूडेंट्स, आज का एजेंडा है बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे आज, एसेंशियली एम्फसाइजिंग ऑन पेज रिप्लेसमेंट. अगर पिछली क्लास का अगर आप देखें फंडा, देन बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट पेज रिप्लेसमेंट. ये मेरा लास्ट क्लास का था, राइट? हम पिछले क्लास में वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट देखे, वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट देखे. देन वी ऑल्सो सॉ बेसिकली लाइक परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी विथ रेस्पेक्ट टू इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम. कि कैसे पेज फॉल्ट रेट विल हैव एन इम्पैक्ट, यस, विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू टाइम. तो हमने ये देखा कि पेज फॉल्ट रेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the performance of virtual memory system. थोड़ा भी अगर page fault rate बढ़ गया, then definitely effective memory access time will keep on increasing. So it is always desirable to reduce the page fault rate. So later हम देखेंगे शायद if time permits के what are the aspects which control or affect the page fault rate. लेकिन उससे पहले दूसरा performance issue जो हमने बात की थी page replacement की. Page replacement is one of the important component of the virtual memory implementation. ठीक है. वर्चुअल मेमोरी एज वी नो इज इंप्लीमेंटेड थ्रू डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग इज लोडिंग द पेजेस ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी ऑन डिमांड एट रन टाइम. दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग. ऑल द पेजेस, हर पेज प्रोसेस का मेमोरी में रहना जरूरी नहीं है. सो दोज विच आर प्रेजेंट इन मेमोरी इट विल लीड टू पेज हिट, और जो पेजेस मेमोरी में नहीं है दैट विल लीड टू पेज फॉल्ट. और जब पेज फॉल्ट होगा तो हमने डिटेल में देखा था कि there are several cases that can arise. Case 1, case 2, case 3 मैंने बात की थी. Case 1 में ये possible हो सकता है कि you may have some empty frames. अगर मान लीजिए आपके पास empty frame हो, then that does not require replacement. Please remember this point. In case during when a page fault happens, अगर आपके पास memory में empty frames available हो, there is no need of any page replacement. Page replacement is needed only when I don't have an empty frame. If I don't have an empty frame, मतलब ये है कि one of the existing pages in memory को हमें चाहिए कि replace करें to get the faulted page. उसके लिए we have several page replacement techniques. तो आपको चाहिए कि आपकी knowledge thorough हो with regard to page replacement techniques. This is a very simple topic, very essential topic. और let me tell you dear student that in previous year questions, PYQs, कई questions आ चुके हैं page replacement पर. तो मैं इसलिए ये सेशन डेडिकेट कर रहा हूँ टोटली ऑन पेज रिप्लेसमेंट. एंड देन इफ टाइम डेफिनेटली परमिट्स आई विल आल्सो टच अपॉन एन एस्पेक्ट ऑफ अनदर परफॉर्मेंस इश्यू ऑफ वर्चुअल मेमोरी, जिसे हम बोलेंगे थ्रैशिंग. ये थ्रैशिंग क्या है? रिलेटेड टू पेज फॉल्ट ही है वो भी, थ्रैशिंग कॉन्सेप्ट. हाउ थ्रैशिंग अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, राइट? एंड देन व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विथ थ्रैशिंग, ये भी हम देखेंगे. तो टोटली आज का हमारा सेशन का लर्निंग आउटकम जो होगा वो है लर्निंग ऑफ पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स बाय वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड देन वी विल टच अपॉन द इशू ऑफ थ्रैशिंग. ये है हमारा एजेंडा. और एक लास्ट पॉइंट जो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा विथ रिगार्ड टू पेज रिप्लेसमेंट, ये है कि बेसिकली लाइक व्हेन आई सेलेक्ट अ विक्टिम पेज, then there are two things that can happen. The victim page may be modified, may not be modified in the memory. अगर मान लीजिए पेज इज मॉडिफाइड, तो देन हमें वी हैव टू राइट दैट पेज ऑन टू डिस्क. बिफोर लोडिंग द फॉल्टेड पेज वी हैव टू राइट दैट पेज ऑन टू डिस्क. अगर नहीं पेज इज क्लीन, देन आई डोंट हैव टू राइट इट बैक ऑन टू डिस्क. सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा आप रिमेंबर कीजिए कि 2 डिस्क ऑपरेशंस आर नीडेड इफ द रिप्लेस्ड विक्टिम पेज इज मॉडिफाइड. Victim page is modified, 2 disk operations, one for saving, another for loading the faulted page. अगर नहीं empty frame है या clean page है, I need only 1 disk operation. So page fault service time is getting affected by the mode of the page, the status of the page. ये page clean है या page dirty है, then that will impact the page fault service time.
तो एम्प्टी फ्रेम और क्लीन पेज के लिए बेसिकली आई नीड ओनली वन डिस्क ऑपरेशन, तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लेस हो जाएगा, या अगर पेज मॉडिफाइड हो तो आपका पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है. So this is all what we discussed, and last point that we covered in the last class was one of the important aspects of page replacement that we need to focus on is reference string, and second is frame allocation policies. मैंने डिटेल में डिस्कस किया था फ्रेम एलोकेशन पॉलिसीज. मतलब जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट सम फ्रेम्स टू द प्रोसेस. तो हमारे पास ये होगा कि वी हैव सम फ्रेम्स अवेलेबल टू अस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स, राइट, एंड देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल एस, देन टोटल डिमांड भी है हमारे पास एस. देन वी से दैट frame allocation is meaningful only when demand is more than the number of frames available. अगर आपका डिमांड ज्यादा हो अवेलेबल फ्रेम से, then only frame allocation is meaningful, वरना frame allocation is not meaningful at all when the demand is less than number of frames. अगर डिमांड आपका less है number of frames से, then whatever the process is asking, you can allocate it, you can give it, there is no problem. The allocation is trivial when the demand is less than the number of frames available, and allocation is meaningful, frame allocation policies are meaningful when the demand is more than the number of frames available. तो हमने कहा allocation policies like equal allocation है, and then we also have proportionate allocation है. Some people even go for 50% rule. मतलब ये है कि whatever process ask for, you give 50% rule. So like that, I am trying to just tell you that essentially there is a need for some frame allocation policies. That's it. अब आज हम start करेंगे discussion what is reference string. What is the definition? Because the crux of page replacement technique, the basis of page replacement technique is essentially nothing but reference string. हम study करेंगे with respect to reference string. तो पहले हम definition ले लेंगे what is reference string. Reference string is sometimes also called as page reference string. So by definition, this is set of successively unique pages. यूनिक पेजेस. पेजेस का मतलब पेज नंबर्स. सक्सेसिव यूनिक मतलब अगर एक पेज आया है फिर सक्सेसिव वही पेज नहीं आएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव यूनिक पेजेस रेफर्ड इन द गिवन लिस्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग. तो इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस रेफरेंस स्ट्रिंग मैं एक एग्जाम्पल ले लूँगा. मेरे फोन में एग्जाम्पल है, so I will take the same example to study the concept of reference string. So please see here. Let us consider the following reference string. Okay, I am taking the following reference string. I will call this the first reference string given as 701.203. This is a problem you can consider 0423, and you can be prepared to work out this question. 0423 0321 0321 201701 201701. This is my given reference string. I have taken from some book as an example. You can of course take your own, there is no problem, but purposefully I have taken this for some distinctness, some uniqueness. चलिए, point number 1 जो आपको essentially remember करनी है बात वो ये है, please remember my point. Every reference string will have two parts. Please remember this. Every reference string will have two parts. Number 1, length of reference string. Length. ये basis पर एक gate question था, वो भी मैं solve करूंगा. Please follow me carefully. Length of reference string L, which is nothing but total number of references. Total number of references. जैसे कि ये जो reference string आप देख रहे हो यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस आप कैलकुलेट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
20 references. So length of reference string of the given reference string is 20. And let me show you the meaning of reference string as per the definition. Set of successively unique pages. देखिए, first we are referring page 0, page 7, then 0, then 1. तो successive जो page है ना वो unique है. 0 के बाद फिर से 0 नहीं आएगा, 1 के बाद फिर से 1 नहीं आएगा successively. बाद में आ सकता है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है. आई एम नॉट सेइंग, प्लीज जनरली स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होकर रॉन्ग करते हैं प्रॉब्लम. आई एम नॉट सेइंग यूनिक इन द लिस्ट फॉर रेफरेंस स्ट्रिंग. आई एम नॉट सेइंग यूनिक इन द लिस्ट. प्लीज ऑब्जर्व, मैं ये कह रहा हूं सक्सेसिवली यूनिक. रेफरेंस स्ट्रिंग के डेफिनेशन में सक्सेसिवली यूनिक का कॉन्सेप्ट आता है. 7 के बाद फिर इमीडिएटली 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 फर्स्ट टाइम जब आएगा तो पेज फॉल्ट हो सकता है. उसके बाद फिर अगर मैं 7 को रेफर करूं पेज फॉल्ट नहीं होगा. इसीलिए हम सक्सेसिव पेज नहीं लिखते हैं, ये रीजन है. ठीक है, सक्सेसिवली यूनिक. तो 7 के बाद फिर 7 नहीं आएगा. हाँ, बाद में आ सकता है 7, बाद में फिर आ सकता है. सक्सेसिवली यूनिक रहेगा. चलिए, ये बात तो समझ में आ गई. ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर एट्रीब्यूट ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग इज नंबर ऑफ यूनिक पेजेस. नंबर ऑफ यूनिक पेजेस, लेट अस डिनोट इट बाय n. जैसे कि मेरे प्रोसेस के रेफरेंस स्ट्रिंग में कितने यूनिक पेजेस है. हाउ मेनी यूनिक पेजेस आई हैव. हाउ मेनी unique pages I have. Please see here. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4 and 7. That's it. 0, 1, 2, 3, 4 and 7. So there are 6 unique pages. 6 unique pages. Unique pages. कौन से हैं? यहाँ पे लिख लेंगे हम. 0, 1, 2, 3, 4 and 7. इसका मतलब conceptual understanding इसकी ये है. Please follow. On disk, this implies indirectly on disk. This is my disk. This is a program which is defined in terms of 6 pages. What are the pages? P0, P1, P2, P3, P4, P7. This could be the meaning of it. Definitely there may be more pages, but minimum these many pages are there on disk for this program. मतलब यह है कि program size, indirectly हम ये मानेंगे कि the size of this program which is making these references is 6 pages. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि दिस प्रोसेस विल आस्क फॉर हाउ मेनी फ्रेम्स. विल नेचुरली आस्क फॉर 6 फ्रेम्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कहेगा प्लीज गिव मी 6 फ्रेम्स बिकॉज माय साइज इज 6 पेजेस. मुझे 6 फ्रेम्स चाहिए. लेकिन हमने पढ़ा डिमांड पेजिंग में कि डिमांड विल ऑलवेज बी मोर देन नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा ठीक है, आपका डिमांड 6 फ्रेम्स है, लेकिन मैं आपको 6 नहीं दे सकता, मैं आपको लेस दूंगा. एंड यू मैनेज योर एग्जीक्यूशन विथ लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स. ये आइडिया है. Right? So from the reference string, how we are making the decision, please follow carefully. Demand for frames is 6. Because I have 6 pages. From reference string, I am deriving that. My demand is 6 pages. I want 6 frames. But the operating system say, I'm sorry, I cannot give you 6 frames. I have to give less. So let us assume here, for problem solving, for the purpose of problem solving, let us assume here that the operating system has given us, for example, 3 frames. Please follow. Operating system has given us 3 frames. मैं यहां पर ले रहा हूं. Please see. These first frame, the second frame, and third frame. These are frames. You can name the frames. Frame A, frame B, frame C. And initially we are using pure demand paging. मैंने लास्ट क्लास में कहा था pure demand paging. Pure demand paging का मतलब क्या है? Execution of the program will start with all empty frames. मतलब purely on demand basis we start the execution. Pure demand paging. So we are following pure demand paging. Right? Execution of the program will start with all empty frames. So how will the execution start? Please follow. So first, no pages are loaded in memory. Right, this is memory. Frames means this is in main memory. This is in main memory. So initially I process refer page 7. Will it cause a fault or not? Yes, because page 7 is not present. So immediately we load P7 into one of the empty frame. यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, आप यहाँ पे ला लेंगे. Let us say page 7. One page fault. The dot indicate a page fault. Next I refer 0 will cause a fault. So bring 0 into one of the frame will also cause a fault. Next I refer 1 will cause a fault because 1 is not present. So therefore 1 will also cause a fault. So far
3 page faults have occurred, and kindly remember, no replacement is needed so far. As long as empty frames हमारे पास होंगे, हमें पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. I have empty frame, no replacement. तो अब तक कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है. Next I refer to will cause a fault because 2 is not present. Now 2 is causing a fault. हमारे पास कोई empty frame नहीं है, तो अब हमें रिप्लेसमेंट अप्लाई करना होगा. तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा पेज हम जो एग्जिस्टिंग है मेमोरी में 701, ये तीनों पेजेस में से हम कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे टू ब्रिंग 2. उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स है. बाय डिफॉल्ट द स्टैंडर्ड वन, जो हमारा स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट टेक्निक है, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है. जो पेज पहला आया था उसे हम रिप्लेस कर देंगे. ओल्डेस्ट पेज है था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज ओल्डेस्ट पेज. तो हर रिप्लेसमेंट टेक्निक का अपना एक क्राइटेरिया होगा. क्या मुझे आप लिखकर बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया है इसका? इसका क्राइटेरिया होगा टाइम ऑफ लोडिंग द पेज, TOL, टाइम ऑफ लोडिंग. हर पेज का अपना टाइम ऑफ लोडिंग होगा. टाइम ऑफ लोडिंग, कौन से टाइम पर आप पेज को लोड किए थे मेमोरी में, टाइम ऑफ लोडिंग. अब यहां पर मैं एक पोटेंशियल 1 मार्क गेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखेंगे कि कौन कौन आंसर करेगा. बी रेडी बॉयज एंड गर्ल्स. एक सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, बी रेडी टू आंसर. आई एम सेइंग दैट एवरी पेज विल हैव टाइम ऑफ लोडिंग एज एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद इट. जैसा CPU शेड्यूलिंग में प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स रहते हैं, प्रोसेस अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, प्रायोरिटी है, एट्रीब्यूट्स, उसी तरह पेज के भी अपने एट्रीब्यूट्स है. वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज टाइम ऑफ लोडिंग. चलिए 1 मार्क गेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पोटेंशियल गेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखेंगे कौन कौन आंसर करता है. बी रेडी बॉयज एंड गर्ल्स. क्वेश्चन इज लाइक दिस. द एट्रीब्यूट ऑफ द पेज लाइक टाइम ऑफ लोडिंग. लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली. द एट्रीब्यूट ऑफ द पेज लाइक टाइम ऑफ लोडिंग इज kept in dash data structure. Fill up the dash. Attribute of the page like time of loading will be kept in a data structure known as dash. जैसा कि प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स कहां स्टोर हो गए, वैसे ही पेज के एट्रीब्यूट्स कहां स्टोर हो गए, मैं आपको पूछ रहा हूं. आंसर दिस क्वेश्चन. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर. 1 मार्क गेट क्वेश्चन. Attributes of a page like time of loading is stored in a data structure dash. As I guessed, many people are saying the same. PCB. Come on, boys and girls. PCB stores what? What do PCB store? Come on. It's not Q. It's not Q. Be careful. Information about the pages, attributes of the pages should be kept in dash data structure. Yes, Gate Easy CSC has answered correctly. Mohammad Asif, no, it is not Q. It is not Q. It is not process control block. Process control block contain the attributes of process. Attributes of process. It is not stored in stack. It is not stored in queue. It is stored in page table. Page table. PT. हर पेज, हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा. पेज टेबल विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेजेस. प्लीज कीप दैट पॉइंट. पेज टेबल. पेज टेबल विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस. इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस. देखिए आप, हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल देखा था अर्लियर. यहां पर फिर से एक बार बता रहा हूं मैं आपको. पेज टेबल स्ट्रक्चर. देयर वर क्वेश्चंस ऑन पेज टेबल स्ट्रक्चर, तो प्लीज फॉलो केयरफुली. अगर ये एक चीज को आप फॉलो करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस. दीज आर पेज टेबल एंट्रीज. द एसेंशियल और मैंडेटरी इंडेक्स इज पेज नंबर 0, 1, 2, 3. दीज आर पेज नंबर्स. द एसेंशियल और कंपल्सरी एंट्री ऑफ द पेज टेबल, मैंडेटरी एंट्री इज फ्रेम नंबर. द फ्रेम नंबर इन विच द पेज इज प्रेजेंट. राइट? Probably okay. So frame number contains, right? The frame number contains the frame F entry. The frame number is the essential entry of the page table. फिर हमने देखा डिमांड पेजिंग के लिए वी ऐड वैलिड इनवैलिड बिट. अब उसी तरह हम एक और फील्ड ऐड करेंगे यहां पर, टाइम ऑफ लोडिंग. मतलब पेज 0 अवेलेबल इन फ्रेम A, लेट अस से वैलिड इनवैलिड बिट 1, टाइम ऑफ लोडिंग से सम वैल्यू 5. And then page 1 available in frame B, let us say valid invalid bit 1 loaded at time 10, like that.
Page 2 is not available, so 0 dash. Page 3 is available in frame C, 1, let us say 15, something like this. This is how we store. Get my point? This is the structure of page table. That's how the page table entry, this is how the page table entry will grow. Page table entry. PT, page table entry. That is how it grows. So kindly remember that the attributes of the page are kept in page table. Associated with every page, 0, 1, 2, 3, etc. I will have attributes like time of loading and other attributes जो अब हम आगे और देखेंगे वो भी यहाँ पर store होंगे. That is how page table entry, generally हम उसकी size बताते हैं as a multiple of bytes. PT is generally E and therefore we say E is greater than or equal to 1 byte. Why 1 greater than or equal to? Because it can contain many attributes like this. It can contain many attributes. Clear? ये concept बहुत important है. चलिए आगे बढ़ेंगे. तो हम time of loading पे होगा. अब हम कंटिन्यू करेंगे. यहां पर हमारे पास among page 7, page 0, page 1 में कौन सा पेज first in first out था? ये तो हमारे लिए आसान है. Page 7 is the first one to come out, is the oldest one to come out, right? Or to get loaded in memory. So therefore अब यहां क्या होगा? चले आगे बढ़ेंगे. So who is the victim here? To bring 2, 7 is the victim. So in place of 7 I bring 2, 0, 1. यहाँ पर आपको केयरफुल ये है कि you have to monitor the arrival time, time of loading of all pages. कौन सा पेज पहले आया, कौन सा पेज बाद में आया, आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है. हम एक डॉट मार के कंफर्म कर लेंगे कि 0 is the first one to come, right? Among 2, 0, 1. अभी हमने लोड किया 2, उससे पहले हमने लोड किया था 1, उससे पहले लोड किया था 0 और सबसे पहले लोड किया था 7. देख लीजिए आप ऑर्डर. तो मैं डॉट यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट पेज टू कम. चलिए नेक्स्ट. 0 doesn't cause a fault, 0 is present in memory. 3 will cause a fault because 3 is not in memory. तो कौन होगा victim? Victim होगा 0. So in place of 0 I bring 3, then 1. चलिए नेक्स्ट क्या होगा? 0 just now we removed, so again will cause a fault. So कौन है victim? 1 है. So in place of 1 I bring 0, 2, 3. अब ये 2, 3, 0 में सबसे पहला पेज कौन सा लोड हुआ था? 2 लोड हुआ था, राइट? उससे पहले, उसके बाद हम 3 लोड किए थे, फिर उसके बाद अभी 0 हम लोड किए. ये रिमेंबर कीजिए. नेक्स्ट 4 will cause a fault. So who is the victim? 2 is the victim. So in place of 2 I bring 4, 3, 0 as it is. Victim is next 3. Remember first in first out is 3. Next 2 cause a fault. So 3 is the victim. So 3 की जगह हम लाएंगे 2, 4 and 0. देखिए आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 0 है यहाँ पे. नेक्स्ट 3 will cause a fault. 0 will be victim. So in place of 0 I bring 3, 4, 2 like this. 4 is the FIFO page here. Then 0 cause a fault. 0 cause a fault. So 4 is the victim. In place of 4 I bring 0, 2, 3. Here अब remember 2 is the first in first out page. Next 3 and 2 both are present in memory. Both are present in memory. No page faults. No page fault. As long as the pages are present in memory, no page fault. Next हम 1 रेफर करेंगे, will cause a fault. 2 is the victim. So 0, 1, 3. अब कौन है इसमें तीनों में? 3 is the FIFO page. Remember. Next 2 will cause a fault because 2 is not present. फिर क्या होगा? 3 की जगह हम लाएंगे 2. तो अब हमारा सिचुएशन है 0, 1, 2. इसमें से सबसे पहले जो आया पेज 0 है. ये अगर आप रिमेंबर करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, वरना अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो यहां ही मिस्टेक करोगे कि कौन सा पेज FIFO है, कौन सा नहीं है. नेक्स्ट 0 will not cause a fault, 1 will not cause a fault because both are present in memory. Next 7 will cause a fault because 7 is not present. So 7 के लिए हम 0 रिप्लेस कर लेंगे, तो 7 होगा, 1 होगा, 2 होगा. फिर उसके बाद क्या होगा? 0 will cause a fault, 1 is the victim, 1 is the FIFO page. तो 1 की जगह 0 आएगा, 7 and 2. फिर लास्ट में हम रेफर करेंगे 1. 1 is also not present. 2 is the FIFO page. So in place of 2 I bring 1, 7, 0. That's it. देखिए आप लास्ट 3 पेजेस जो हम रेफर किए वही है फ्रेम्स में यहाँ पर. दिस इज द अप्रोच ऑफ वर्किंग ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO, right? So using pure demand paging, which is the default one generally, 3 frames, listen, 3 frames has given how many page faults? Count कीजिए number of doubts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 page faults have been caused. तो जब हमने 3 frames लिए हैं तो it caused 15 page faults. 15 page faults. यही बेसिस पर हम page fault rate कैलकुलेट करते हैं. Page fault rate. What is the page fault rate P now? Number of page fault 15 by total references. Total length is 20. 15 by 20 मतलब
3/4 मतलब 75%. Page fault rate is 75% using FIFO for 3 frames. ठीक है. अब मुझे जल्दी लिख के बताइए चैट विंडो में, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स, अगर मान लीजिए आप नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर रहे हो, अभी हमने 3 फ्रेम से वर्कआउट किया, अगर हम 4 या 5 फ्रेम से वर्कआउट करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करेंगे टू द प्रोसेस, लॉजिकली व्हाट शुड हैपन टू द पेज फॉल्ट रेट? क्या आप लिख के बताएंगे यहां पर चैट विंडो में? कैन यू राइट डाउन इन द चैट विंडो एंड टेल what should happen to the page fault rate if you increase the number of frames? Naturally, logically, what should happen? बोलिए, जल्दी लिख के बताइए. What should happen if you increase the number of frames to the process? Right? Naturally, what should happen? Decrease. Page fault rate should decrease. जितने आप number of frames ज्यादा देंगे process को, page fault rate should decrease. तो उसके लिए, yes, very good. Everybody is saying page fault rate should decrease. अब मैं यहां ये चाह रहा हूं for the same data set as a matter of practice. आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, राइट, क्रैश कोर्स के रिवीजन के लिए, मैं यहां पर यह चाह रहा हूं, सेम डेटा सेट के लिए, सेम रेफरेंसिंग के लिए, मुझे प्लीज क्विकली वर्कआउट करके बोलिए 4 फ्रेम्स अगर लेंगे हम तो कितने पेज फॉल्ट्स होंगे यूजिंग प्योर डिमांड पेजिंग. मैं नहीं करूंगा, आपको करना है. कम ऑन, वर्कआउट फास्ट. जस्ट विद इन 2 मिनट्स यू शुड वर्कआउट. इफ आई गिव यू 4 फ्रेम्स, सेम रेफरेंसिंग, P4 रिप्लेसमेंट, प्योर डिमांड पेजिंग, कितने पेज फॉल्ट्स होंगे? प्लीज वर्कआउट एंड टेल. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, वर्कआउट फास्ट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है, कर लीजिए जल्दी क्लास में. हाउ मेनी पेज फॉल्ट विल हैपन? हाउ मेनी पेज फॉल्ट विल अकर इफ आई गिव यू 4 फ्रेम्स? क्योंकि ये बेसिस पर हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसके बेसिस पर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस पिछले गेट एग्जाम्स में. How many page faults will occur with 4 frames using pure FIFO replacement with pure demand paging? Okay, Satyam Binayak is saying 10. Come on, other people also, please ratify Satyam's answer. Nick is also saying 10. Very good, excellent. People are on the toes. You're on sync. How many page faults with 4 frames? Come on, others. Kapil, Tapan. Get Easy CFC 10. Parashuram Chaudhary also say 10. Very good. Nobody is telling different answers, so I'm very happy that you are totally in sync with the concept. आप बिल्कुल सही कर रहे हो. तो चलिए, answer is 10. Excellent. So that means 10. So that means page fault rate P become 10/20, half, 50%. So it has decreased from 75% to 50%, natural. So this aspect of what do you call page replacement can be shown by means of a graph. Please see, this aspect, this property can be shown by means of a graph. Kaise? On x-axis, we will say number of frames. A very important property. I'm showing number of frames on x-axis. Y-axis पे हम पेज फॉल्ट रेट लिखेंगे, पेज फॉल्ट रेट. Then what will be the characteristic between the page fault rate and number of frames? How will the graph look like? The graph will be a decreasing curve. The graph will be a decreasing curve like this. This is how. As you increase the number of frames on x-axis, page fault rate decreases, and it reaches some level. I say K. Number of frames K, number of page fault will also be K, and beyond that, if you further increase the number of frames, the page fault rate will remain same K.
Mohammad Hussain, you made a mistake. 9 is not correct, 10 is correct. K is the value number of frames such that the page fault rate will also be K. Will also be say K. अब मैं यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको देखेंगे प्रीवियस डायग्राम में. कैन यू टेल फॉर दिस डेटा सेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K जो हमने ग्राफ में मार्क की थी? K is that figure of number of frames for which the number of page faults will also be K. And if you further increase the number of frames, K plus 1, K plus 2, K plus 3, the page fault rate remain K using pure demand paging. Pure demand paging. तो मुझे बताइए, what is the value of K for this data set? 1 mark question. Come on, let me see. What is that value of K? What is that value of K for this data set? Right? As per the behavior of the graph, as per the behavior of the graph, what is the value of K for this data set? No, it is not 10. Be careful. Number of frame, K is number of frames. So what is that number of frame for which the number of page fault will also be K for this reference string, this reference string. Yes. Ratnesh Chandravanshi, you are right. Tapan Ghosh, it is not 10. Please observe, understand the question. Question is, कितने frames के साथ आपकी number of page faults भी उतने ही होंगे for this reference string, right? For this reference string. It will be 6 unique pages. Equal to number of unique pages. K is equal to n. N is number of unique pages. N is equal to number of unique pages. Bhagavad Dhari, it is not 5, 6. देखिए आप, this reference string has 6 unique pages. Remember, 6 unique pages. Please understand. 6 unique pages. 0, 1, 2, 3, 4, 7. So if I give you 6 frames for this process, please understand. If I give you 6 frames for this process, then don't you agree that the number of page faults will not be more than 6? 6 ही page faults होंगे. 6 ही page faults होंगे. कितनी भी लंबी reference string ले लीजिए आप, if it has 6 unique pages, it will have 6 frames and 6 page fault. That's it. Pure demand paging, not prefed demand paging. मैं repeat कर रहा हूँ, pure demand paging. उसी तरह, if I give you 7 frames, number of page faults still will be 6. 8 frames, number of page faults will be 6. I hope you got the concept now. You got the concept now, right? So this is called the threshold at which the page faults and the number of frames become same, and beyond that it remains same. This is the behavior assuming pure demand paging. मैं repeat कर रहा हूँ आपको. Got it? So the value of K is nothing but number of unique pages. Number of unique pages. This is the idea. But the question is, right, like this behavior has been obeyed right now. Right now, it has obeyed with 3 frames, 15 page fault. 4 frames, 10 page fault. So therefore, for this reference string, the behavior is, this behavior is because of, I mean, as per the graph. The behavior is as per the graph. चलिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब देखेंगे हम और एक reference string लेंगे. We'll take one more reference string. We'll take one more reference string, right? I'll take another reference string. See you on board, please. And you need to work out this quickly. Second reference string. Reference string 2. I'll take another reference string. It will have pages like 1, 2. I'll take it from my phone. Just a second. One, 2, 3, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Come on. I want you to exercise, solve this problem. I want you to solve this problem. Come on, boys and girls. Please see on board. Right? For this reference string, second reference string, please solve this question, everybody. P4 replacement is used with pure demand paging, as I told earlier. 3 frames. How many page faults? 4 frames. How many page faults? Come on, P4 replacement. Same reference, this reference string. Please work out and tell me quickly. Work out and tell me quickly how many page faults will occur with 3 frames and 4 frames for this reference string using P4 replacement. Come on, boys and girls, please work out and tell fast. Jaldi work out kariye. Because based on this, as I said, we are going to study a very important property of page replacement.
Tushar Gupta, I don't know anything about that. You have to contact the team for your doubt. Okay? मुझे कोई आइडिया नहीं है उस बारे में. How many pitfalls? Please work out. Work out. Practicing is most important aspect of gate preparation and gate revision. थियोरेटिकल रिवीजन नहीं होना चाहिए. थियोरी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. सो प्लीज डोंट थिंक दैट नो सर आई कैन डू इट. जनरली प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया होगा कि आप कहां पर सिली मिस्टेक्स करोगे और फिर आप अपने आप को कैसे करेक्ट करोगे. यस, 3 frames will cause 9 pitfalls. Tushar is saying, sorry, Parashuram is saying correct. Come on, 3 and 4 others also. Satyam Nayak, you are correct. Somebody please work out with 4 frames how many pitfalls. With 4 frames how many pitfalls? 3 frames 9 बराबर है. बिल्कुल सही है. Rahul Kumar, you are right. Nick, you are wrong. Nick, please check your answer. Satyam Binayak, you are absolutely correct. 9 and 10, correct. With 4 frames, 10 pitfalls. With 4 frames, 10 pitfalls. Harsh Srivastav, 3 frames, 9 pitfalls is correct. Tapan Ghosh, correct. 4 frames के लिए 10 pitfalls आ रही है, नहीं है, चेक कर लीजिए एक बार. Correct. SY, you are also right. So 9 and 10, excellent. तो चलिए आगे बढ़ेंगे. अब यहां पर what is your observation? ये observation बहुत important है. Can you please write down and tell what is observation? What have you observed for this data set? What is your observation for this data set with 3 frames and 4 frames for this reference string? Actually, when I got 3 frames, 9 pitfalls, listen boys and girls, when I got 3 frames, 9 pitfalls, with 4 frames, the number of pitfalls should have been less than 9, because the natural characteristic is as you increase the number of frames, pitfall rate should decrease. Look at that. As I increase the number of frames, pitfall rate should decrease. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? Like earlier first example में pitfall rate तो decrease हुआ ना, यहां पर decrease हो गया, right? It has decreased. 3 frames से 15, 4 frames से 10, it has decreased. लेकिन second data set में the pitfall rate has increased. With 3 frames 9 जब था तो 4 frames से less than 9 होना था natural behavior के हिसाब से, लेकिन वो हो गया है 10. It has increased against the natural characteristic. Something which is going against the natural behavior, natural characteristic, is termed as anomaly. Anomaly. Anomaly means something unusual behavior, something going against the natural behavior. Anomaly. This anomaly of page replacement was observed by a person, by a scientist by name Belardi, and hence this is called Belardi's anomaly. Right? Anomaly means something unusual. This is something unusual. ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है against the natural characteristic. That is called anomaly. Right? नवीन कुमार पासवान, गलत है आपका, एक बार चेक कर लीजिए आप. Because other people have got correctly, आप एक बार चेक कर लीजिए where you are going wrong. With 3 frames you should get 9, with 4 frames you should get 10. Right? So Belardi's anomaly. What is the definition of Belardi's anomaly? यहां पर लिख रहा हूं मैं. Note 1. Note 1. In general, with the increase in number of frames, with the increase in number of frames, page fault rate decreases. This is natural process as per the graph. Right? अगर छोटी ग्राफ हम यहां पे डाल के बताएं, because of this graph behavior. In general, as you increase the number of frames, यहां पर number of frames, और यहां पर है page fault rate. As you increase the number of frames, page fault rate should decrease. But sometimes here, note 2, we'll write note 2. Note 2. Sometimes means for few reference string. For few reference string. Not every time. Not for every reference string, for few reference strings.
with the increase in number of frames, with the increase in number of frames, with the increase in number of frames, page fault rate also increases. Page fault rate also, मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, also increases. Sometimes, not always. क्यों sometime? देख लिया आप. Earlier for this example, no Bellardi's anomaly. So here for this data set, no Bellardi's anomaly. BA is Bellardi's anomaly. ये रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए FIFO रिप्लेसमेंट नो Bellardi's anomaly. लेकिन जब सेकंड रेफरेंस स्ट्रिंग हम यहां पे लिए FIFO के लिए Bellardi's anomaly. मतलब Bellardi's anomaly do not happen always, sometime for few reference string. कुछ रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए होता है वो. हाँ, राइट क्वेश्चन सत्यम विनायक, वाई Bellardi's anomaly अक्कर. वेरी गुड. क्यों होता है? इसके पीछे एक थियरी है, एक रिसर्च है, राइट, which is beyond the gate syllabus, that's why I'm not discussing it. लेकिन सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे पर देखने के लिए आप देख सकते हो. गूगल पे आप ये प्रॉपर्टी है जो मैं बोल रहा हूं, स्टैक प्रॉपर्टी. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैक. यहां पे मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको कह रहा हूं, आप इसको बाद में और आगे एक्सप्लोर कर सकते हो. देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड स्टैक प्रॉपर्टी ऑफ पेज रिप्लेसमेंट. स्टैक प्रॉपर्टी ऑफ पेज रिप्लेसमेंट. Stack property of page replacement. Stack property of page replacement. ठीक है? There is something called stack property of page replacement. No, this is. Take this only. I'm marking it for your convenience. If you are interested, then basically you can explore this property. And they have given a proof for this, that those replacement techniques that do not obey stack property are bound to suffer from Bellardi's anomaly. So reason आपका ये है सत्यम विनायक कि there is a property called stack property of replacement. जो भी replacement technique और stack property obey नहीं करेंगे, they have proved that basically such replacement techniques are bound to suffer from Bellardi's anomaly. ये है reason for Bellardi's anomaly. सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको जो गेट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे और फर्दर आ सकते हैं फ्यूचर में, वो ये है कि प्लीज रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड Bellardi's anomaly do not happen always. पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा sometimes. यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड sometimes, not always. Means for few reference string, not for every reference string. Second important point with regard to Bellardi's anomaly is not all replacement techniques suffer from Bellardi's anomaly. Not all replacement techniques suffer from Bellardi's anomaly, only FIFO. And there is something called FIFO based. Those algorithms which are based on FIFO. Those algorithms that degenerates to FIFO. Though algorithm FIFO by default, base है FIFO. And those which work based on FIFO. जैसा कि एक एल्गोरिथम है LRU approximations में जिसे हम बोलते हैं सेकेंड चांस एल्गोरिथम, सेकेंड चांस, so that suffers from Bellardi's anomaly. FIFO based plus those that degenerates to work like FIFO, जो FIFO पे degenerate हो जाएंगे, may suffer from Bellardi's anomaly. So Bellardi's anomaly do not suffer always, do not happen always, and not all replacement techniques suffer from Bellardi's anomaly. Only FIFO and FIFO based replacement techniques are bound to suffer from Bellardi's anomaly. Am I right? Is this clear? This is the ideology of Bellardi's anomaly. So this is all about FIFO replacement. Yes, Tushar, very good evening. You are late by 45 minutes. No problem. चलिए आगे बढ़ेंगे. For the same reference string 70120300423 0321201 etc. we will take up the next replacement techniques. चलिए, if I ask one simple question here, let me see how many of you will answer. Let me see how many of you will answer. Come on. Question is this. The objective of CPU scheduler is to maximize CPU utilization, minimize the average turnaround time, average waiting time.
The objective of GPU scheduler is to minimize the average turnaround time, waiting time, maximize the CPU utilization. उसी तरह what should be the objective of page replacement algorithm? बोलिए. How should you satisfy, how should you replace the pages such that what should be the objective? What should be the objective of page replacement technique? क्योंकि हमारे पास कई क्राइटेरियाज होंगे पेज रिप्लेसमेंट के लिए. सो व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक? क्या लिख के बताएंगे मुझे? व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक? कम ऑन. मिनिमाइज पेज फॉल्ट. वेरी गुड. Minimize the page fault. So objective of page replacement technique is to minimize the page fault rate. That means I should victimize such page or pages which would lead to minimization of the page fault rate. Can you also tell me which replacement technique among the ones which you have studied, जो पहले आपने पढ़े हैं, उन replacement techniques में बताइए कौन सा algorithm is going to minimize the page fault rate? Which algorithm is going to give you the least page fault rate? Come on. Tapan goes not with minimum number of frames. Just minimize the page fault rate for a given number of frames. Come on. Which page fault rate, which page replacement technique is going to give you the minimum number of page fault rates? Which page replacement technique? कौन सी? उसका नाम क्या है? Yes, Satyam B Naik. That is correct. Mohit, it is not decreasing page fault rate. Yes, it is called optimal replacement. It is called optimal replacement. अब हम यहाँ देखेंगे optimal replacement. Please observe. We'll make a definition of second replacement technique here. Optimal replacement. Second replacement technique. Optimal replacement. इसका definition क्या है? What is the definition of optimal replacement? Come on, boys and girls. In the event of page fault, with no empty frames available, victimize that page which will not be used for the longest duration of time, in future references. Longest duration of time in future references. This is optimal replacement. Chaliye, I will take the same reference string which I gave you earlier, and in respect of that we will try to work out the problem. वही reference string दूंगा मैं आपके workout करने के लिए. Please work out. Let us work out this and tell me. So I will have the reference string 701 203 0423 0321 201701 201701. This is my reference string. Let us apply optimal replacement to it. Come on, optimal replacement. We'll work out with 3 frames. यहां पर मैं 3 frames लूंगा. 3 frames. So before me workout, मैं वर्कआउट करने से पहले आप करके बताइए बेस्ड ऑन द डेफिनेशन. देखेंगे कितने लोग सही आंसर देते हैं. देखेंगे. चमान 3 frames. यूज प्योर डिमांड पेजिंग, PDP, प्योर डिमांड पेजिंग. 3 frames, 3 frame, फ्रेम A, फ्रेम B, फ्रेम C. ये रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइए कि कितने पेज फॉल्ट होंगे. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल वर्कआउट करेक्टली बिफोर आई वर्कआउट. मेरे वर्कआउट करने से पहले आप प्लीज वर्कआउट करके मुझे बता दीजिए क्विकली कि हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स विल हैपन. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, how many page faults will happen?
9. Is it 9? Pure demand paging. Satyam Binayak, check it again. Okay, many people are saying 9. Very good. Okay, so I should take 9. Mohit is also, yes, most of them are saying 9, so I have to go with 9. Let me see. But I would like to work out myself and check. Come on, see on board. Initially 7013 paid faults, no replacement. 7013 paid fault, no replacement. 2 cause a fault because 2 is not present. So कौन आएगा? Please यहाँ पर देखिए जिसे नहीं मालूम. 2 is causing a fault. तो हमें देखना है among 701 which is occurring at the end. 0 यहाँ पर है, 7 यहाँ, सॉरी 0 के बाद कौन सा पेज आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर 7 है. 7 is at the end. तो मतलब हम 7 की जगह लाएंगे पेज नंबर 2. देखिएगा. Next, 0 does not cause a fault, 0 is available. 3 will cause a fault, 3 will cause a fault, 3 will cause a fault, right? थोड़ा डार्क कर लूंगा मैं. 3 will cause a fault. देखिए आप, among 201, 0 है, 2 है, 1 at the end. So in place of 1 हम लाएंगे 3. चलिए, 0 does not cause a fault, 4 will cause a fault. देखिए आप 4. तो among 203, देखिए आप 203, 2 3 0, 0 is at the end. तो मतलब विक्टिम हो गया 0, 0 की जगह आएगा 4. Next, 2 will not cause, 3 will not cause, 0 will cause a fault, 0 is not present. देखिए आप, among 243, we are referring 3 to 4 तो रेफर ही नहीं हो रहा है, तो हम 4 रखे क्यों? वेस्ट कर लेंगे, इसलिए हम 4 को रिमूव करेंगे. तो in place of 4, we are going to bring 0. Next, 3 2 both are present, 1 will cause a fault, 1 is not present, 1 will cause a fault. So in place of, among them, 2 0 हम रेफर कर रहे हैं, 3 रेफर नहीं कर रहे हैं, तो in place of 3 we are going to bring 1. नेक्स्ट क्या होगा? 201 तीनों भी अवेलेबल है, 7 इज नॉट अवेलेबल, 7 विल कॉज ए फॉल्ट इन फ्यूचर. 7 के बाद 01 हम रेफर कर रहे हैं, तो हमें रखना चाहिए 01. 2 नहीं रेफर कर रहे हैं, 2 की जगह हम 7 लेकर आएंगे. राइट, दिस आर द नंबर ऑफ पेड फॉल्ट. देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वेरी करेक्ट. 3 frames have resulted in 9 paid faults. Very quickly work out. Let me see 4 frames के लिए कितने पेज फॉल्ट्स होंगे. Let me see. Come on, boys and girls. 4 frames. Pure demand paging. Optimal replacement के लिए कितने पेज फॉल्ट्स होंगे? Come on. How many page faults will happen with 4 frames using optimal replacement? Yes, 4 frames के लिए कितने? Quickly work out and tell me. How many paid faults? 8 paid faults. Nick, you are right. Others? 4 frames, how many paid faults? Rahul Kumar, correct. So 4 frames will cause 8 paid faults. Paid fault rate is decreasing. No Bellardi's anomaly. लेकिन मैं एज अ होमवर्क, आप होमवर्क क्या कर सकते हो? एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं, प्लीज. Later, because we don't have sufficient time here, later what I want you to verify is this. ये रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हमने प्रूफ किया था FIFO रिप्लेसमेंट सफर्ड फ्रॉम बेलाडीज एनोमली. ये रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए आप लेटर ऑन प्रूफ कीजिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूजिंग ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट. सेकंड यहां पर लिख रहा हूं मैं. सेकंड रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए आप क्या कीजिएगा? यूजिंग ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट आप क्या करिए? 3 frames हाउ मेनी पेड फॉल्ट्स, 4 frame हाउ मेनी पेड फॉल्ट्स आप डिटरमिन कीजिए और प्रूफ करिए कि इट डज नॉट सफर फ्रॉम बेलाडीज एनोमली. यही रेफरेंस स्ट्रिंग जिसके लिए FIFO ने बेलाडीज एनोमली से सफर हुआ था, आप प्रूफ कर सकते हो कि यूजिंग सेम रेफरेंस स्ट्रिंग ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट नो बेलाडीज एनोमली. कितने पेज फॉल्ट्स होंगे आप वर्कआउट करके चेक कर सकते हो और प्रूफ कर सकते हो कि बेलाडीज एनोमली नहीं होगी ये रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए. और इनफैक्ट कोई भी रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट के साथ बेलाडीज एनोमली नहीं होगी. दैट इज द पॉइंट. ओके, सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन डू दैट. चलिए अब मुझे क्विकली यहां पर यह बता दीजिए कि ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट तो वो रिप्लेसमेंट टेक्निक है जो सबसे लेस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जनरेट करेगा. लेकिन what is the drawback or limitation of optimal replacement?
लिमिटेशन ऑफ ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, क्या कोई मुझे बताएंगे? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट? नो डाउट दिस इज द most optimal algorithm, it is the ideal algorithm, but what is the drawback of optimal replacement? Come on. What is the drawback of optimal replacement? Yes, the drawback is, as Bhagavad Dhari say, that it is not implementable. Practically, it is non-implementable. Like SJF, like shortage of first, we cannot implement it. Like shortage of first is non-implementable practically because we don't know burst time. तो इसी तरह optimal replacement here is also not implementable. Why is it not implementable? Why? Because you cannot look into the future references. जैसे हम अब प्रेजेंटली पेज 7 रेफर कर रहे हैं, इन फ्यूचर कौन सा पेज रेफर करेंगे हमें पता नहीं. वी कैनॉट लुक इनटू द फ्यूचर, हम फ्यूचर में नहीं देख सकते, राइट? दैट्स व्हाई वी कैनॉट इंप्लीमेंट इट प्रैक्टिकली. देन क्वेश्चन अराइजेस, why is it used when it is not implementable? वही रीजन है जो हमने SJF में देखा था. It is the ideal algorithm, right? It is used as a benchmark. It is used as a benchmark to measure the performance of other algorithm to find out. Benchmark के लिए generally मैं एक symbol use करता हूँ like this, right? It is used as a benchmark to measure the performance of other algorithm to find out which algorithm is closer in performance to ऑप्टिमल. जैसा कि आप एक C++ जावा प्रोग्राम लिख सकते हो फॉर ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, फॉर FIFO रिप्लेसमेंट, फॉर अदर रिप्लेसमेंट टेक्निक, और हर एक की पेज फॉल्ट रेट फ्रीक्वेंसी आप कंपेयर कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू ऑप्टिमल टू फाइंड आउट विच एल्गोरिथम इज क्लोजर इन परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमल. यही एक रीजन है फॉर हैविंग ऑप्टिमल. ठीक है. देन व्हाट इज दैट एल्गोरिथम विच इज क्लोजर इन परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमल और विच इज ऑपोजिट टू ऑप्टिमल इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी? इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, व्हाट इज ऑपोजिट टू ऑप्टिमल? In terms of its statement functionality, what is opposite to optimal? Opposite is you cannot look into future, you can look into the past, right? अगर मैं यहाँ ये वर्ड अगर फ्यूचर निकाल दूं डेफिनेशन में, देखिए आप, फ्यूचर निकाल के पास्ट अगर लिख दिया मैं, then it become which algorithm? If the word future is replaced with past, listen, if the word future is replaced, अगर आप फ्यूचर 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे आप, अगर फ्यूचर में देखने के बजाय पास्ट में देखेंगे, क्योंकि जो पिछले रेफरेंसेस आपने देखा है उसमें तो आपको पता है कौन से पिछले रेफरेंसेस आपने देखा है. तो व्हाट इज द क्वाइट ऑपोजिट इन फंक्शनैलिटी टू ऑप्टिमल? यस, इट इज कॉल्ड LRU, एज तुषार एंड निक एंड अदर पीपल हैव सेड. LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. अब मैं यहां पर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की बात करेंगे, राइट? सेम रेफरेंसिंग विल वर्क आउट. आई विल कीप इट हियर. ठीक है, चलिए. I will take reference string again. ठीक है, 701 203 0423 0423 0321 201701. यही रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए अब हम थर्ड रिप्लेसमेंट टेक्निक फॉलो करेंगे, LRU, जिसका मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. जो पेज सबसे पिछले बार में यूज हुआ है, पेज विच हैज नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो सबसे आखिर में पीछे आखिर में रेफर किया गया है, सबसे आखिर में, वो लीस्ट रिसेंटली यूज. मोस्ट रिसेंटली यूज जो अभी अभी हमने रेफर किया, लीस्ट रिसेंटली यूज जब सबसे आखिरी में रेफर किया गया, लीस्ट रिसेंटली यूज पेज. चलिए वर्कआउट करके मुझे बताइए, बिफोर आई वर्कआउट 3 फ्रेम्स के लिए हाउ मेनी पेज फॉल्ट यूजिंग प्री डिमांड पेजिंग. सेम रेफरेंसिंग है हमारा, 3 फ्रेम्स. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वर्कआउट एंड टेल. 3 फ्रेम्स के लिए हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स विल हैपन विथ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड? कम ऑन. Least recently used. Let me see your understanding. Yes. How many pitfalls will happen?
12. Okay, only one person is saying. What about others? Mohit SY, get easy CSC. Okay, Satyam Binayak, Bhagwadari is saying 12. Yes, Mohit, correct. Yes, answer is 12. कैसे हम एक बार कर लेंगे यहां पर, for those who have confusion can see on board. Can see on board those who have confusion. Because generally I have seen people have some bit of confusion with LRU, understanding of LRU. तो हम 3 frames लेंगे. These are frames, right? Is frame A, frame B, frame C. Please see on board. Initially 701 3 page faults, no replacement. 701, I load it here. 701 3 page faults, no replacement. चलिए आगे बढ़ेंगे. Next I refer 2 will cause a fault. Who is the victim? देखिए आप, 2 causes a fault. Who is the victim? हमने 2 से पहले 1 को रेफर किया, तो 1 is most recently used. Before that 0, before that 7. 7 is least recent. 7 is occurring at the end. So in place of 7, we are going to bring, in place of 7, we are going to bring 2. ठीक है, these LRU. चलिए आगे बढ़ेंगे. 0 will not cause a fault, 0 is present. 3 will cause a fault, 3 is not present. So 0 is MRU, most recently used. Before that 2, before that 1. So मतलब ये है कि 1 is victim. So in place of 1, I am going to bring 3. Next 0 does not cause, 0 is present. 4 will cause of a fault because 4 is not present. Who is the victim? देखिए आप, 0, 3, 0, 2 is at the end. So in place of 2, I am going to bring 4. Then 2 and 3, 2 will cause a fault, 2 will cause a fault. देखिए आप, who is the victim? 4, 0, 3, 3 is at the end. So 3 की जगह आएगा 2. Next 3 again will cause a fault, 3 is also not present. 2, 4, 0, 0 is at the end. So 0 की जगह आएगा 3. Next 0 cause a fault again because 0 is not present. 3, 2, 4, 4 की जगह आएगा 0. 4 की जगह आएगा 0. ये हो गया. चलिए, 3 and 2 both are present in memory, no page fault. उसके बाद आएगा 1 will cause a fault, right? So 1 की जगह कौन आएगा देखिए आप, 2, 3, 0, 0 at the end. So therefore in place of 0 आएगा 1. ठीक है. Then 2 will not cause, 2 is present. 0 will cause a fault, 0 is not present. So 2, 1, 2, 3, 3 is at the end. 3 is at the end. So 3 की जगह आ जाएगा 0. Next 1 is present, no page fault. 7 will cause a fault. देखिए आप, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 2 is at the end. So in place of 2, I bring 7. 7. 0, 1, no page fault. These are the number of page fault, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. So 12 page fault. That's right. Absolutely right. उसी तरह आप अपने तौर पर, right, अपने तौर पर आप number of page faults for 4 frame भी कर सकेंगे and others will continue. ठीक है. This is LRU. यहां पर एक लिख के बताइए, एक 1 mark क्वेश्चन पूछ रहा हूं. What is the criteria, selection criteria for LRU implementation? क्योंकि this is implementable, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए. ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट इज नॉन इम्प्लीमेंटेबल, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसका क्राइटेरिया होना चाहिए. जैसा फीफो का क्राइटेरिया क्या था, सिलेक्शन क्राइटेरिया टाइम ऑफ लोडिंग, उसी तरह इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कोई लिख के बताएगा? क्या कोई लिख के बताएगा? व्हाट विल बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर LRU, least recently used? Okay, what will be the selection criteria for least recently used? Come on. Anybody? What will be the selection criteria for least recently used? Criteria. जैसा हम time of loading was the criteria for FIFO. No, not using. आप नहीं समझ रहे क्वेश्चन, भगवाधारी.
What will be the selection criteria? Selection criteria for FIFO was time of loading. उसी तरह यहां पर क्या selection criteria होगा? I'm not asking how you implement it. Referencing time, correct. So that we will call it as time of reference. Time of reference, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे TOR. ये भी पेज टेबल में होगा, पेज टेबल एंट्री में. जैसा टाइम ऑफ लोडिंग डालेंगे, टाइम ऑफ रेफरेंस भी डालेंगे. And one way of implementing LRU is by means of stack method. One way of implementing LRU is using stack. वो कैसे है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा. If you are interested, you can read from the Galvin textbook. You can read from Galvin textbook. Right? You can read from Galvin textbook. One way of implementing LRU is by means of stack. Time of reference, very correct. चलिए आगे बढ़ेंगे अब. Just symmetric opposite to LRU क्या होगा? Please observe. Symmetric opposite to LRU. What will be symmetric opposite? Symmetric opposite to LRU. यहां पे हम बोलेंगे symmetric opposite to LRU. Fourth replacement technique. What is it? Come on. Symmetric opposite to LRU. Least recently used का symmetric opposite क्या हो जाएगा? Most recently used. MRU. Most recently used. Most recently used. मतलब the page which you have referred just now, most recently used. मैं full work नहीं करूंगा, थोड़ा partially work करूंगा इसके लिए. Kindly observe. मैं reference string थोड़ी ले रहा हूं. 701 203 0423 यहां से लेंगे. ये आगे आगे ऐसा है. मोस्ट रिसेंटली उसका थोड़ा आपको वर्क करके बताऊंगा, वहां से आप खुद ही से आप खुद ही से कर सकोगे. प्लीज ऑब्जर्व. हम 3 फ्रेम्स लेंगे, कैसे एमआरयू वर्क करेगा हम देखेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. बी रेडी. क्या होगा? 701 इनिशियली 701 3 पेड फॉल्ट, नो रिप्लेसमेंट एज यूजुअल, नो रिप्लेसमेंट, 3 पेड फॉल्ट्स. अब क्या होगा? We are going to refer to 2 is going to cause a fault, 2 is not present. So in place of 2 के लिए कौन सा पेज विक्टिम होगा? 701 में most recently used 1. तो मतलब 1 की जगह हम लाएंगे 2. 1 की जगह हम लाएंगे 2. उसके बाद 0 will not cause a fault, 0 is present. फिर 3 will cause a fault, 3 is not present. 3 के लिए कौन विक्टिम होगा? 0 होगा. most recently used 3 से पहले हमने किस पेज को रेफर किया? 0. तो 0 की जगह आएगा 3. 0 की जगह आएगा 3. फिर 0 अगेन रेफर्ड, 0 इज नॉट प्रेजेंट, राइट. सो 0 विल कॉज ए फॉल्ट. तो कौन विक्टिम होगा? 3 विक्टिम होगा, क्योंकि 0 से पहले हमने रेफर किया था 3. तो 3 की जगह भी आएगा 0. ऐसे कंटिन्यू होगा. फिर क्या होगा? 4 विल कॉज ए फॉल्ट बिकॉज 4 इज नॉट प्रेजेंट. 4 से पहले हमने किसे रेफर किया था? 0 को रेफर किया था, 0 इज प्रेजेंट. तो 0 विक्टिम हो जाएगा 4 के लिए. फिर उसके बाद 2 इज प्रेजेंट, नो पेड फॉल्ट. 3 विल कॉज ए फॉल्ट, 3 will cause a fault, right? 3 will cause a fault. 3 will cause a fault. तो 3 किसकी जगह आ जाएगा? 3 से पहले हमने कौन सा रेफर किया? 2 रेफर किया. 2 is the victim. So in place of 2 we bring 3. इस तरीके से most recently used वर्क करेगा. most recently used. रिमेनिंग पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए. मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां पर. आई होप दिस मोस्ट रिसेंटली यूज्ड इज क्लियर. उसी तरह वी ऑल्सो हैव a class of algorithms. Yes, Tushar, maybe Tapan Ghosh, maybe you're right. It may cause 8 page faults. I don't think 8. It will be more than 8. More than 8. क्योंकि ऑप्टिमल ही 9 पेज फॉल्ट जनरेट किया, तो इट विल बी मोर देन दैट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. Check on board. The next class of replacement techniques. Next class of replacement techniques. Okay, next class of replacement techniques, the 4th one, it is called counting algorithms. Counting algorithms. Can anybody tell me what are the
two counting algorithms, A and B. There are two counting algorithms. What are they? Can anybody tell me? Can you tell what are the two counting algorithms? Yes, Chanchal, you are right. LFU and MFU. LFU and MFU. Least frequently used. Least frequently used. और ये होगा most frequently used. Most frequently used. Frequency indicate count. तो इसका दोनों का सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा. सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? जैसा टाइम ऑफ लोडिंग इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ FIFO, टाइम ऑफ रेफरेंस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ LRU एंड MRU, उसी तरह ये दोनों एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा COR, काउंट ऑफ रेफरेंस. काउंट ऑफ रेफरेंस मतलब आफ्टर लोडिंग द पेज हमने कितने बार पेज को रेफर किया, काउंट ऑफ रेफरेंस. तो मतलब हर पेज के साथ एक काउंटर होगा दैट इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द पेज हैज बीन रेफर्ड आफ्टर लोडिंग इनटू मेन मेमोरी. एक बार हम पेज को लोड करने के बाद फर्स्ट टाइम जब लोड करेंगे काउंट होगा 1. अगर पेज मेमोरी में हो और अगर हम फिर से रेफर कर रहे हैं काउंट होगा 2. दैट इज फ्रीक्वेंसी, टाइम ऑफ रेफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. टाइम ऑफ रेफरेंस इज फॉर LRU एंड MRU एंड दिस इज बेसिकली फॉर LFU एंड MFU, टाइम ऑफ रेफरेंस. तो मैं वही रेफरेंस स्ट्रिंग जो मैंने पहले पार्शियली ली थी वही लूंगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ दिस. 701 203 0423 so on. I will just partially show how this works with respect to LFU and MFU. बाकी का आप उसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि मुझे रिमेनिंग टॉपिक्स भी थोड़े प्रॉब्लम भी करनी है और थ्रैशिंग के बारे में भी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देना है. तो प्लीज फॉलो मी. तो LFU MFU का दोनों साइमल्टेनियसली मैं वर्क करके बताऊंगा आपको कैसे वर्क करेगा. इनिशियली 701 पेज फॉल्ट विल हैपन विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, लेकिन हमें यहां पर यह करना है कि इन पेजेस के लिए काउंटर मेंटेन करेंगे हम 1 1 1. दिस 1 इंडिकेट इन ब्लू इंक द काउंट ऑफ रेफरेंस, कितने बार हमने पेज को रेफर किया. ठीक है. नेक्स्ट 2 विल कॉज ए फॉल्ट. 2 इज नॉट प्रेजेंट. तब क्या है, यहां पर सभी का काउंट सेम है. LFU एंड MFU सभी के लिए काउंट सेम है. तो हम जब काउंट पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वी कैन गो फॉर एग्जांपल FIFO. वी कैन गो, दे विल एक्चुअली मेंशन देयर इज नो डिफॉल्ट, लेकिन हम अगर मैं कह रहे हैं, हम यहां पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल टाई ब्रेकिंग थ्रू FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो दोनों LFU एंड MFU के लिए 7 विक्टिम होगा बिकॉज सभी का काउंट सेम है. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज इज 7. सो इन प्लेस ऑफ 7 हम ला लेंगे यूजिंग LFU एंड MFU पेज नंबर 2 और 2 का भी काउंट हो जाएगा 1. सभी का काउंट अभी सेम है. चलिए आगे बढ़ेंगे. 0 विल नॉट कॉज ए फॉल्ट. 0 का काउंटर हो जाएगा 2. 0 का काउंटर हो जाएगा 2. फिर क्या होगा, नेक्स्ट 3 हम रेफर करेंगे, राइट. 3 विल कॉज ए फॉल्ट. जब 3 फॉल्ट करेगा तो यूजिंग LFU लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक है 2 एक है 1. दोनों का काउंटर 1 1 है, लीस्ट काउंट. लेकिन इन दोनों में जो भी पहले आए हम उसे सेलेक्ट करेंगे. कौन आए पहले? 1 आया पहले, तो 1 विक्टिम हो जाएगा यूजिंग LFU. और अगर हम मान लेते हैं MFU मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, तो जब वो पेज जिसका काउंट सबसे हाई हो, किसका काउंट हाई है? 0 का है. तो यूजिंग MFU 0 वुड हैव बीन विक्टिम. यूजिंग LFU 2 इज द विक्टिम, सॉरी 1 इज द विक्टिम. 1 इज द विक्टिम. आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट. तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम और करते जाएंगे. This is the working of LFU and MFU counting algorithms. Based on this, I would like to tell you one important point that most of the time, please observe, most of the time it has been followed, it has been found, most of the time it has been found that the performance of LRU is mostly closer to optimal. इसीलिए most of the operating system they implement LRU as their replacement technique. Most of the operating system they implement LRU. ठीक है. फ्रॉम गेट परस्पेक्टिव, एक्चुअली क्रैश कोर्स में मैं वो टॉपिक नहीं ले सकता हूँ, लेंदी टॉपिक है, लेकिन आपको चाहिए पढ़ने के लिए. दोज हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर गेट, आई वांट टू स्ट्रिक्टली एडवाइज यू, देयर इज अनदर वेरिएशन ऑफ LRU कॉल्ड यू हैव टू स्टडी एज पार्ट ऑफ योर गेट प्रिपरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड LRU approximations. This is the last class of replacement technique which I want you to study on your own. LRU approximations अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो प्लीज पढ़िए. And I would suggest you can read this from the textbook of Tan and Mom. You can read it from
the textbook of Tannenbaum. LRU approximations. LRU approximations matlab those are the replacement techniques which are not exactly LRU, लेकिन they pretend to work like LRU. They approximate to the behavior of LRU. ये ऐसे वर्क करेंगे जैसे LRU है, लेकिन एक्चुअली होंगे नहीं LRU. That is LRU approximation. There are 4 algorithms in this, which are all important from gate perspective. आप पढ़िए, because you have already taught you LRU. So how they are approximating to the behavior of LRU, you can study from the Tannenbaum textbook about these 4 algorithms called LRU approximations. ठीक है, चलिए some questions लेंगे. Answer this question as a matter of refreshing. Come on. As a matter of refreshing, please answer this question. Which of the following page replacement algorithm suffers from Bellardi's anomaly? MSQ. Yes, Chanchal, you are right. Excellent. हमने अभी पढ़ा FIFO, लेकिन मैंने कहा if you remember FIFO based are also bound to suffer from Bellardi's anomaly, and there is an algorithm LRU approximation by name second chance. Second chance is FIFO based. Second chance is FIFO based, so therefore the correct answer is A and D. The correct answer is A and D. चलिए second question लेंगे. Come on, answer this question. It is also slightly interesting, slightly twisted. Please answer carefully. Answer carefully. Come on, boys and girls. Prashant Prabhakar, D is also correct. What is the answer for this? Answer for this question. Generally, people get slightly confused with this. Okay, answer is B. Very good. A memory page containing a heavily used variable. Heavily used variable का मतलब ये है कि it is very frequently used. Very frequently used. Heavily used. That was initialized very early. What does it mean? Initialized very early. Loaded first. Loaded first. It is a page that came first into main memory. Loaded first. And is in constant use. Look at that. It is heavily used. Constant use. Such a page will be removed by whom? जो पेज सबसे पहले लोड किया गया लेकिन कॉन्स्टेंटली यूज में है, कौन सा रिप्लेसमेंट करेगा? लीस्ट रिसेंटली यूज तो नहीं करेगा उसे. हम वो पेज चाहिए जो सबसे आखिर में जो यूज ही नहीं किया गया, वो चाहिए LRU. मोस्ट रिसेंटली यूज ऑप्शन ही नहीं है यहां पर, राइट? मोस्ट रिसेंटली यूज भी नहीं बोल सकते. तो कौन सा होगा? FIFO रिप्लेसमेंट. FIFO ये नहीं देखेगा कि पेज इज इन कॉन्स्टेंट यूज और नॉट, हेविली यूज और नॉट. FIFO बोलेगा पहले जो पेज आया था इनिशियलाइज वेरी अर्ली, उसे रिमूव कर दो. तो सच अ पेज विल बी रिप्लेस्ड बाय FIFO रिप्लेसमेंट. सो राइट आंसर इज बी फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए इसका आंसर बताइए. दिस ऑल्सो स्लाइटली ट्विस्टेड थियरेटिकल क्वेश्चन. कम ऑन, आंसर मी. Yes, Chanchal, you are right. Rohit, you are right. Ibina, Ramit, you are right. Correct, correct. Many people are correct. Consider a virtual memory system with FIFO replacement. FIFO replacement for an arbitrary means any type of reference. Page access pattern means any reference string. Increasing the number of page frames in main memory will it always decrease the page fault or sometime decrease the page fault? Actually, when I am increasing number of frame, page fault rate should decrease. लेकिन FIFO replacement से ये भी हो सकता है कि page fault rate sometimes increase. So therefore, the correct answer is sometimes increase the number of page faults.
दिस इज ड्यू टू, बोलिए आप, ड्यू टू Ballard's anomaly, due to Ballard's anomaly is the answer. चलिए आगे बढ़ेंगे. ये क्वेश्चन शायद हमने देखा हो पहले. आई डोंट रिमेंबर, जस्ट टेल मी. The minimum number of page frame that must be allocated to a running process in a virtual memory environment is determined by what? I think we did this in the last class. Virtual memory, yes. I remember instruction set architecture, right? We did this, yes. So I don't have to tell. अब मैं क्विकली रिमेनिंग टाइम में आपको एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी बताऊंगा. वन ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस इज थ्रैशिंग. क्या कोई वन लाइन में डेफिनेशन लिखेगा कि व्हाट इज थ्रैशिंग? क्या कोई वन लाइन में लिख के बताएगा व्हाट इज थ्रैशिंग? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, यस, व्हाट इज थ्रैशिंग? One line statement, let me see. What is thrashing? Just in one line. Excessive paging is not correct. Yes, high paging activity correct. Simple definition of thrashing is, the simple definition of thrashing is, let me write it down here. Excessive or high paging activity. Confusion is, what is paging activity? People generally get confused. What is paging activity? What is paging activity? The act of servicing page faults. Act of servicing page faults. तो मतलब आपकी पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, हाई पेज फॉल्ट रेट, राइट, नॉट वर्चुअल मेमोरी रिसोर्सेस ओवर यूज, नो, हाई पेज फॉल्ट रेट causes paging activity. So high paging activity happens when the page fault rate is high. So indirectly this means that there is a high page fault rate in the system. High page fault rate in the system. This is a practical scenario, please. High page fault rate in the system leads to high paging activity, and that state of the system is called thrashing. Please write down and tell me, what are the reasons for the system to thrash? Come on. What are the reasons? I will classify the reasons into two types. Number one, primary. Number two, secondary. क्या मुझे आप write down करके बताओगे what are the primary reasons for the system to thrash? Thrashing क्यों होती है? Come on. Most of the time it is involved in page replacement, correct, rather than execution. Okay. So why do page fault rate increase? Why thrashing occurs? What are the main contributing reasons for the system to thrash? Come on. What are the main reasons for the system to thrash? Why page fault rate increases? Come on. What are the main reasons? Less frames and more processes. Exactly correct. Yes. Lack of frames. मतलब lack of memory. अगर आपका पास मेमोरी कम है सिस्टम में, but this lack of frames essentially happening due to high degree of multi-programming. देखिए, आप जैसा आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करोगे, सेम मेमोरी तो आपकी लिमिटेड है, उतनी ही है. यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ रैम. आपके पास अगर 8 GB हो तो 8 GB रहेगी. अगर 100 प्रोसेसेस है तो 8 GB यूज कर रहे हैं. अगर मान लीजिए आप 200 प्रोसेसेस करोगे तब भी 8 GB यूज करेंगे. मतलब जैसा आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करोगे, फ्रेम अलोकेशन प्रोसेस के लिए डिक्लाइन होगा. फ्रेम अलोकेशन डिक्लाइन होगा तो पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज होंगी. प्रोसेसेस विल कॉज पेज फॉल्ट, गेट ब्लॉक्ड एंड CPU utilization decreases. तो ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना ऑफ थ्रैशिंग
you can clearly exhibit by means of a simple graph like we have shown earlier occasion. कैसे करेंगे? यहां देखिए आप. We can show the act of thrashing by means of a simple curve, by means of a simple graph. कैसे होगी? ये देखिए आप. On x-axis we will say degree of multiprogramming. On x-axis degree of multiprogramming. On y-axis we will say percentage CPU utilization. Percentage CPU utilization. मतलब यह है कि as you increase the degree of multiprogramming from 0, utilization of CPU increases, reach some top, and after that it declines and then eventually gets 0. This is how the behavior of the curve with regard to degree of multiprogramming and percentage CPU utilization. तो इसका मतलब यह है कि at this lambda, threshold lambda, you receive the highest utilization of CPU, mu, efficiency, highest utilization. So as you increase the degree of multiprogramming, utilization also increases, but it reaches the top. लेकिन इसके बाद क्या होगा? जैसे ही आप keep on add करेंगे process, you start decreasing the utilization of CPU, and this is the state of thrashing. ये है आपका domain thrashing का. Consequence of thrashing क्या है? Why thrashing is undesirable? Thrashing is undesirable. Thrashing like deadlock. Thrashing like deadlock is an undesirable phenomena. Is undesirable. Thrashing like deadlock is not desirable. We never want system to thrash. क्यों? जब thrashing होगी तो processes block हो जाएंगे. Processes get blocked and utilization of CPU will decline. देखिए आप, utilization कम हो रहा है CPU का. So thrashing is an undesirable feature because that leads to blocking of processes, leading to underutilization of CPU. And extreme form of thrashing is deadlock. देखिए आप, total collapse हो जाएगा system. Extreme form of thrashing leads to deadlock. So these two are the primary reasons, but in addition to that, let me tell you, dear students, there are two secondary reasons also. There are a couple of secondary reasons also, not two, say a few secondary reasons. What are the secondary reasons for the system to thrash? Come on. Write down in the chat box. What are the other reasons, other reasons for the system to thrash? Come on. What are the other factors that may influence the page fault rate? एक तो होगा high degree of multiprogramming, दूसरा है lack of frames. In addition to that, what are the other reasons that may also contribute to thrashing? Come on. Yes, page size. Very correct, page size. If the page size becomes small, it will lead to more number of pages, and therefore it may lead to more page faults. May lead to, not always, small page size. Next, come on, what are the other reasons? What are the other reasons apart from page size? Apart from page size, what are the other reasons that may contribute to thrashing? What are the other reasons that may contribute to thrashing other than page size? Other than page size is page replacement technique. These two are more important reasons that may also contribute to thrashing. If I don't use a good replacement technique, it will definitely lead to thrashing. So therefore, selection of a good replacement technique also is important in the design and implementation of operating system to control thrashing. Right? So this is primary reasons and secondary reasons. Lastly, मुझे आपको ये बताना है thrashing control strategies. How to control thrashing? Thrashing control strategies. Come on, here I will write it. How are they classified? They are classified just like deadlock. Thrashing control methods. They fall in two categories. What are the two categories? One is like prevention. Prevent or avoid. And the other is detect and recover. These are the two approaches. And both of them you can tell from the graph. How can we prevent thrashing? Look at the graph and tell how can we prevent or avoid thrashing. This can be done by controlling
Come on. Controlling degree of multiprogramming. By controlling degree of multiprogramming. Make sure that the degree of multiprogramming is not going beyond this limit where you have the highest utilization. That is one way of controlling degree of multiprogramming. You can prevent or avoid thrashing. Second aspect is, once you detect that system is thrashing, low utilization of CPU, heavy disk utilization, that thrashing is detected. High degree of multiprogramming, low utilization of CPU, majority of processes are blocked, thrashing, detection. Recover कैसे करेंगे आप? You can, right now you are operating at this level, you have to bring the system performance to this level. That means you have to momentarily decrease degree of multiprogramming, and that is done by process suspension. Process suspension. हमने पहले बात की थी, sometime to improve the performance, you have to suspend some processes. Sometime यहाँ पर performance decrease हो रहा है due to thrashing. So therefore you can suspend some of the partially completed processes. यहाँ पर आप suspend करेंगे ताकि आप ये level से processor system के performance को यहाँ पर लाएंगे. Suspend some of the processes from memory. उसके resources ले लीजिए processes की, memory ले लीजिए, right? So that the existing processes can complete their execution, and later you can bring the suspended processes back. And the component that does process suspension is your medium-term scheduler. The medium-term scheduler will carry out swapping out and swapping in of the processes suspension to improve thrashing phenomena. So this is all about this. ये आपके preparation के लिए बता रहा हूँ because we don't have time. So preparation के लिए there is one more aspect which you can focus on the study of thrashing, and that is generally called working set model. ये एक important model है, working set strategy or working set model. You can make a study from GATE exam perspective because some GATE questions were asked in earlier papers on this also. It's a time consuming topic. It may take more than half an hour, or at least when I teach in regular batch, it will be covered in an hour as such. So from GATE exam perspective, I would suggest you make a study of. Generally students ignore this topic, and as a result will go wrong. We'll have to bypass the questions. So I would say you complete this topic with the completion of the topic of working set strategy. So this is all about what I planned for virtual memory from the perspective of the crash course. ठीक है? अब next class में हम very important third module start करेंगे, जिसका मान लो yeah, PYQ, if you work out of all the problems of thrashing and virtual memory, that should be more than sufficient enough. Bhagavad Dari. Solve all PYQs with regard to virtual memory, that should be more than sufficient enough for the preparation of virtual memory. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टॉपिक फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स, जहां पर मैं बात करूंगा एलोकेशन मेथड्स एंड द लॉजिकल फाइल सिस्टम एक्सेट्रा, राइट? So don't skip, please, Nick. Don't skip this topic of working set model. It's very important, right? It's very important. Study it. So that is it. So next class में मिलेंगे हम. Next class we will discuss about file system implementation aspects, like mainly concentrating on contiguous allocation, linked allocation, index allocation, Unix inode, Unix and Linux inode structure, and some interesting problem solving on inode particularly, because that is very important topic. ठीक है? तो चलिए मिलते हैं next class. Good night all of you. Take care.